Hello. Hello, 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 and welcome. And every time I leave, it's too long. Okay, so let's wait for 1 minute more for some more people to join. For the time being, those of you who have joined, you can share the link of the class. Till then, hello and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. I am your educator Prerna, and as always, I'll be dealing with the Bihar special portion. And we are right now covering with the Bihar geography section. So yes, let us wait for just 1 more minute. Good evening. And yeah, we just missed the class by a few minutes. As you know, there's always some technical glitch with me. Unfortunately, I am always there suffering with the technical glitch, but I'm always trying to fix it so that I can meet you guys on time. I'm getting used to the software actually. The reason is I'm getting used to the software. That is it. This is the first time I'm interacting on a live session. So not the first time, but the first time experience that I'm interacting on a live session. So there are glitches, but you know, I'm learning as quick as possible. Yeah. So good evening everyone. Good evening. And welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. You are watching me on Unacademy BPSC channel, and without any delay, let us start with the Bihar special portion. And today we will be covering with the Bihar geography section. Okay. तो आज का हमारा टॉपिक है द सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार. सो येस्टरडे लेट अस क्विकली समराइज. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने पढ़ा द शिवालिक रेंज, अब द डिफरेंट रेंजेस. शिवालिक रेंज है, द कैमूर रेंज, द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स, द आर्चियन सिस्टम ऑफ रॉक्स, द quaternary rock formation over here which forms the plains of the Bihar, the tertiary over here, and all the different features of Bihar like the diaras. Good evening Juhi. Good evening Juhi, very good evening. You can share the class with your friends and ask them to join, and you can also join us on Unacademy Plus, and you can use my code PRE10 to unlock the maximum benefit and the maximum discount. The batch has already started from 29th of March and my class has been scheduled today 8 बजे से, रात के 8 बजे से मेरी क्लास है और हम लोग बिहार से ही स्टार्ट करेंगे. Okay, so hurry up, take the subscription, join us. Okay, let's get back. Vivek, good evening Vivek, how are you? Good evening. This is Diara. I taught you yesterday Diara, then Chaur, and then Oxbow Lake. Okay, and here I told you about the Tal feature over here, and this is the Camur range. The Camur range. तो इतना मैंने आपको कल बताया था. और मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सबो लेक के बारे में बताया था. बादल, गुड इवनिंग. बादल, very good evening. Sorry for the delay again, but I'm catching up. Yeah. Oxbow Lake के बारे में मैंने आपको बताया. The best example of Oxbow Lake in Bihar was the Kanwar Tal or the Kanwar Jheel or the Kanwar Lake, which is in Begusarai. Yes, आज 8 बजे है और कल से रेगुलर वही 10 बजे वाली टाइमिंग हो जाएगी. आज 8 बजे है. आज 8 बजे है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल थिंग. आज 8 बजे है और कल से आई हैव टॉक टू माई टेक टीम और कल से हम लोग वापस से 10 बजे हो जाएंगे. ओके, so this is the Kanwar Tal.
One more thing which I missed yesterday, कांवर ताल के साथ साथ I also forgot to tell you about Goga Beel. Goga Beel. You can write this. Write it in your notebook. Goga Beel. Goga Beel is in Katihar. Katihar. Fresh page पर लिखते हैं. Oxbow Lakes in Bihar. Write it. Oxbow Lakes in Bihar. Okay. तो पहला एग्जाम्पल है, एज आई टोल्ड यू, कांवर झील, कांवर लेक, कांवर ताल, कांवर झील इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इट इज़ द फर्स्ट रामसार साइट ऑफ बिहार एंड इट इज़ द 39th रामसार साइट ऑफ इंडिया. ये मैंने आपको कल बताया था एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव रिटन दिस. ओके. The second one I forgot yesterday, we were running out of time, is Goga Beel. बिहार एसआई के लिए कौन सा बैच ले सकते हैं? You just visit the Unacademy app. आप उसमें BPSC सेक्शन पर जाइए and there are batches running for it. You can see Unacademy BPSC. Welcome Juhi. Goga Beel is again it is an oxbow lake. ठीक है, it is an oxbow lake and it is in Katihar district. It is in Katihar district. This is the Katihar district and this is Begusarai district. And Goga Beel is also an oxbow lake and it is a community reserve. It is a community reserve. It is also a conserved site. So let us come to the map. This is Katihar. जब भी कोई भी नए प्लेस का मेंशन हो, हेलो भावना, हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड. जब भी हम लोग किसी नए प्लेस को मेंशन करते हैं या कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम आता है, ऑलवेज ट्राई रेफरिंग टू द मैप. ऑलवेज सी कि वो मैप में किधर है वो, सो दैट यू कैन गेट यूज टू द मैप. ओके, मैपिंग से आप यूज टू ऐसे ही होंगे. वेन एवर देयर इज अ न्यू नेम, जस्ट गो टू द मैप एंड रेफर. Quickly go to the map and refer कि ये place किधर है. So this is Katihar, okay, and this is बेगूसराय. So यहाँ पे क्या है? कांवर. यहाँ पे क्या है? गोगा बील. Okay, clear? So ये भी आप लिख लेंगे. ये मैं आपको कल बताना भूल गई थी. No worries. So this is the new edition. I hope you have written. Okay. Now let us come to the soil structure of Bihar. Today we are going to study the soil structure of Bihar. Let me rub this also because we will be needing the map. And my dear friends, as I told you, please keep a map in front of you. ठीक है? It's not a very big thing. बहुत आसानी से map you can procure in the market or you can download it from the internet. Always keep a map in front of you. Mapping is very very important for BPSC. Why mapping is important? Because ये जो districts है ना, इसको chronology में arrange करने आता है from east to west, north to south. आपको कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर है या फिर कोई नया इनिशिएटिव, आपको पता होना चाहिए कि व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग इन हियर इन माय सपोज मुजफ्फरपुर, बिकॉज इट इज़ इन नॉर्थ बिहार. सो इसको आप ज्योग्राफी से तभी लिंक कर पाओगे. आपको मैप को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. ऑलवेज कीप अ मैप एंड यू नो आई विल बी रेफरिंग टू मैप एवरी नाउ एंड देन, सो आई एडवाइज यू टू कीप अ मैप विथ यू ऑल्सो. ओके, लेट अस कम टू द सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार. सो पहला जो सॉइल टाइप जो बिहार में मिलता है, सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे, जस्ट गो ऑन राइटिंग. ओके, आई विल एडवाइस यू जस्ट गो ऑन राइटिंग, डोंट वेट फॉर एनीथिंग. इज द एलुवियल सॉइल. ओके, एलुवियल सॉइल. यू नो बिहार इज बिहार हैज़ द गंगा प्लेन. बिहार लाइज इन द गंगा प्लेन. बिहार हैज़ रिवर गंगा. सो जो भी गैंजेटिक एरिया है, जो गैंजेटिक प्लेन है, ये हमारा गैंजेटिक प्लेन है. ये हमारा गैंजेटिक प्लेन है. द ए प्लेन विच इज द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर गंगा is called the Gangetic plain. So this is the most fertile region of India from the perspective of agriculture. This region is considered agriculturally very prosperous. Why is it agriculturally prosperous? Because it has alluvial soil, abundance of alluvial soil. And where does this alluvial soil come from? My class on Plus will start from today itself. Tonight 8 p.m. Due to some technical issues we were delayed.
ठीक है, बट वी हैव फिक्स्ड इट एंड वी आर कमिंग अप 8 PM टुडे, और कल से मॉर्निंग 10:05 AM. ओके, देयर वाज सम इशू एंड रीशेड्यूलिंग डन. आज है 8 PM से और कल है 10 AM से रेगुलरली. ओके, तो आज अगर आप चाहें तो आप मुझे लाइव देख सकते हैं यूट्यूब अनअकैडमी प्लस पर, और कल से मॉर्निंग 10 AM. ओके, द डिफरेंस विल बी कि यहाँ क्लासेस थोड़ी छोटी होती हैं और वहाँ क्लासेस थोड़े लंबे जाते हैं, तो यू नो देयर इज़ वन इंटरेक्शन, और ये थोड़ा लंबा जाता है, सो यू गेट डीपर इंसाइट ऑन टॉपिक्स. So that is the only difference. Otherwise topics तो same ही है. You can you know the same topics will be covered, but greater depth में cover होगा. Okay, let's come back to the point. So ये है alluvial soil. Why? Because गंगा है, तो गंगा है और जितनी भी हिमालयन रिवर्स है वो इस एरिया को ड्रेन करती हैं. They bring fine sediments, fine soil particles with them. They deposit all the fine sediments on their banks, and hence this area becomes rich in alluvial soil. So alluvial soil is good from the perspective of cultivation. Okay, what I want to tell you is 90% of Bihar is alluvial soil. 90% of Bihar's total area is alluvial soil. So बिहार में एग्रीकल्चर इतना प्रॉस्परस और इतना प्रीडोमिनेंट, और हमारा पूरा इकोनॉमी जो है वो इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास abundance of alluvial soil है. We have abundance of alluvial soil, lots of alluvial soil. So क्योंकि soil fertility अच्छी है, so definitely it supports agriculture, and that is why we have predominance of agriculture in Bihar. Okay, so where is the pen? Okay, what happens in alluvial soil? Rich तो होता है, but इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. It is rich in potassium, केमिकली जिसको हम लोग के कहते हैं. बट नाइट्रोजन कंटेंट में, N stands for नाइट्रोजन कंटेंट में थोड़ा ये लो है. alluvial soil जो है नाइट्रोजन कंटेंट में थोड़ा लो होता है, इसीलिए फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करना होता है. फर्टिलाइजर्स, सो फार्मर्स हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर सॉइल फर्टिलिटी. ओके, so farmers have to use a lot of fertilizers for soil fertility. And what is the fertilizer? You know NPK. You know this NPK 4:2:1. ये जो है आइडियल रेशियो है NPK का, 4:2:1. ये NPK है. सो K तो है, बट ये N जो है ना ये मिसिंग होता है alluvial soil में. क्यों मिसिंग होता है? क्योंकि जो सपोज जो रिवर्स आ रही है, सपोज दिस इज अ रिवर, ठीक है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हिमालयास. ओके, सो इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स विद इट. बहुत सारे तो सेडिमेंट्स ये लेकर आ रही है अपने साथ. इट इज़ ब्रिंगिंग सेडिमेंट्स, और ये क्या करते हैं, सारे सेडिमेंट्स को अपने बैंक्स पे डिपॉजिट कर देते हैं. ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल द सेडिमेंट्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड. नहीं, आई एम देयर इन द अचीवर्स 2.0 बैच. मेरे क्लासेस थोड़े लेट से स्टार्ट हुए हैं. आई एम देयर इन द बैच. ओके, आज ही रात 8 बजे से मेरी क्लास है. यू कैन जस्ट कम एंड ज्वाइन. So this is all the sediments. Let us not deviate. Okay, मेरा flow टूट जा रहा है. Let us first cover this. Okay, and then I'll read the comment section. Okay, so all the sediments are getting deposited over here. ये जो area है इसमें सारा ये जो river है, it deposits all the sediments on the banks. Okay, it deposits all the sediments on the banks. Right? तो उससे क्या होता है ना कि These are fine alluvial particles. अब क्या होता है कि अगर ये, क्योंकि ये फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल स्ट्रक्चर है, तो इसमें कायदे से तो इसमें ट्रीज आने चाहिए. ओके, इसमें कायदे से ट्रीज आने चाहिए. इसमें सारे ट्री वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह को ग्रो होना चाहिए था. फॉरेस्ट वगैरह ग्रो होता, फिर दैट फॉरेस्ट यू नो जो उनके फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं, द लीव्स, दे वुड फॉल, the tree would, you know, the twigs would fall. तो इससे क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डिकम्पोज होता. ठीक है, ये डिकम्पोज होता, तो ये क्या बनता, डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बनता. ठीक है, एंड दिस ह्यूमस इज द थिंग विच इज रिच इन नाइट्रोजन.
अब आप बोलेंगे कि इधर इतने ट्रीज क्यों नहीं हो जाते हैं? आपने देखा होगा गंगा वगैरह के किनारे, जो गंगा के किनारे एरियाज जो है, जो बैंक एरियाज है, वहाँ रिच फॉरेस्ट नहीं है. दीज एरियाज आर नॉट कवर्ड विथ फॉरेस्ट एरियाज. वाई? बिकॉज फॉर फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट जो है इसको अगर ग्रो करना है, सपोज यू हैव प्लांटेड अ ट्री, आपके पास एक गमला है और उसमें आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, आपने एक पौधा लगाया. सो यू हैव प्लांटेड द सीड एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा, for maybe 10 days depending on the type of seed. You have to wait for some days and you have to let the plant grow. Similarly, यहाँ पे भी for the forest to cultivate, you have to give time to the forest to grow. But what happens is the river is continuously flowing. For centuries, we don't know the exact date, but for centuries the river Ganga has been flowing, and for centuries it has been bringing sediments with it. तो ये सारे sediments तो, क्योंकि द रिवर इज फ्लोइंग डेली, ऐसा तो नहीं है कि आज रिवर फ्लो हुई और कल गंगा इज ऑन अ हॉलीडे, नहीं, आज फ्लो नहीं करना है भाई. रिवर इज फ्लोइंग डेली एंड डेली इट इज ब्रिंगिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट विद इट. तो डेली डिपोजिशन हो रहा है ना यहाँ पे. इमेजिन यू, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बिकॉज द रिवर इज कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग फॉर ईयर्स, डेली ये अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं और डेली यहाँ डिपोजिशन हो रहा है. तो डेली डिपोजिशन हो रहा है, तो आप समझो ना ये एरिया डायनामिक है, यहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर डायनामिक है. ओके, यहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर इज वेरी डायनामिक. डेली न्यू लेयर ऑफ सॉइल इज बीइंग डिपॉजिटेड, न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट इज बीइंग डिपॉजिटेड. द ओल्ड सेडिमेंट, द ओल्ड लेयर, ओके, लेट मी डब दिस. डेली न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट्स इज बीइंग डिपॉजिटेड हियर, और जो ओल्ड सेडिमेंट्स है उसको पुश कर देता है. जो ओल्ड सेडिमेंट्स है, जो ओल्ड एलुवियम है, उसको वो पुश कर देते हैं बैकवर्ड्स, सो दैट द न्यू एलुवियम कैन कम एंड डिपॉजिट. सो दिस एरिया इज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन, इट इज डायनामिक, एंड सिंस इट इज डायनामिक, एवर चेंजिंग, सो फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो हियर. फॉरेस्ट यहाँ ग्रो होने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है, बिकॉज फॉर फॉरेस्ट यू नीड अ स्टेबल अनडिस्टर्ब्ड सॉइल. यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहाँ डेली सेडिमेंट्स ग्रो हो रहे हैं. तो क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ फॉरेस्ट नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर पेड़ से जो टूट कर गिरते हैं वो गिरेंगे नहीं, वो सब ऑर्गेनिक मैटर सॉइल पे डिपॉजिट होगा नहीं, तो ह्यूमस आएगा नहीं. फॉरेस्ट नहीं है तो ह्यूमस नहीं आएगा, ह्यूमस नहीं है तो नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में नहीं रहेगा. सिंपल एज दैट. अंडरस्टैंड? आप क्रोनोलॉजी समझिए. फॉरेस्ट, ह्यूमस, नाइट्रोजन. नो फॉरेस्ट, नो ह्यूमस, नो नाइट्रोजन. सिंपल. क्लियर? So deposition नहीं है. That is why this soil, despite being very fertile, it is very fertile. It is a very fertile type of soil, very fertile, but it is lacking in nitrogen. तो इसीलिए farmers को कल्टिवेशन के लिए फर्टिलाइजर्स लेनी होती है, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर सब्सिडी. इसीलिए द क्वेश्चन अराइजेज ऑफ फार्मर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी. फर्टिलाइजर का क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है. सो दिस इज द रीजन. दिस इज अबाउट द अलूवियल सॉइल. ठीक है, अब आप, ये है बिहार का पहला सॉइल टाइप विच इज अलूवियल सॉइल. पहले हम लोग ब्रॉडली देख लेते हैं सॉइल टाइप्स क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा सॉइल किस एरिया में है. ठीक है, लेट मी चेक the position. Yeah, position is clear. Okay, now come to the next is the sandy soil, red soil. Okay, so red soil किधर मिलता है? Red soil generally you find it in the hilly areas. Red soil is formed due to leaching. Okay, what is leaching? If there is a hill, suppose this is a hill and there is lot of rainfall, बहुत बारिश हो रही है, तो दिस हिल इज फॉर्म्ड ऑफ सम रॉक्स. डेफिनेटली हिल किस चीज़ से बने होते हैं? रॉक्स से ही बने होते हैं. तो जो भी बारिश हो रही है ना, रेन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इरोजन. इट इज एन एजेंट ऑफ इरोजन. ड्यू टू रेन ऑल्सो देर इज इरोजन. सो ये इरोजन होता है रेन के कारण. यू अंडरस्टैंड? सो इट वॉशेज अवे द soil, and it washes away, it carries away the soil and all the mineral particles, and it takes it to the bottom layer, as a result of which the soil found over here is not very fertile, because सारे minerals तो wash off हो गए. Okay, not the lava, no, not lava. लावा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? लावा पे आप किधर चले गए? मैं तो बहुत जनरल सी बात बता रही हूँ, एकदम ही इजी सा बात है ना. आप देखो, ये एक पहाड़ है, सपोज एक जनरल कोई माउंटेन समझो, तो दिस माउंटेन इज मेड अप ऑफ सम रॉक ना.
कोई भी रॉक, चलो ठीक है, लावा के डिपोजिशन से ही बना है, मे बी इसका स्ट्रक्चर इग्नियस है, मान लो ये इग्नियस रॉक से ही बना हुआ है, ओके, या किसी भी रॉक से बना हुआ है, सेडिमेंट्री वॉट एवर, बट इट इज रेनिंग, सपोज इट, एंड इफ इट इज रेनिंग, so the rain will wash off all the minerals, rain will wash off all the minerals, and this process of washing off is called leaching. This is leaching, so it is a kind of weathering, it is a kind of weathering. So what happens is the essential minerals and everything is washed off, and the soil over here is not very fertile, वो इतना fertile रह नहीं जाता है because of excessive leaching of minerals. तो जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है रेड सॉइल का, इट इज़ नॉट वेरी रिच एंड इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन, ओके, या, सो द रेड सॉइल इज रेड, इट इज़ रेड, तो रेड कलर कहाँ से आता है, इट इज़ ड्यू टू आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो आयरन के प्रेजेंस से ये रेड सॉइल आता है, एंड दिस रेड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, नॉट फर्टाइल, यू विल राइट दिस, these are the two types of soil which we have found in Bihar. अब आते हैं next. We just have some water. Okay. Now, before I tell you the map structure, let me tell you about one more thing about the alluvial soil. इस alluvial soil के बारे में ही एक चीज़ और बता दूँ ताकि आप बाद में मुझसे ना क्वेश्चन करो. ये alluvial soil है. Alluvial soil, it is of two types. खादड़ soil, आपने अगर NCERT geography पढ़ा होगा तो you must be familiar with this term. And the second one is bhangar. खादड़ and bhangar. What happens is, this is the river. Clear? This is the river. And अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, रिवर फ्लोइंग, ये रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जितने भी सेडिमेंट्स लेकर आ रहे हैं, इट इज़ डिपॉजिटिंग ऑन द बैंक्स, बट सिंस द रिवर इज फ्लोइंग इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रिवर तो डेली फ्लो हो रहा है ना, गंगा इज फ्लोइंग फॉर एवर, सो इट इज कंटिन्यूइंग टू ब्रिंग द सेडिमेंट्स विद इट. सेडिमेंट्स आते ही जा रहे हैं, सेडिमेंट्स मतलब आते ही जा रहे हैं, एक मिनट, जस्ट लेट मी फिक्स द कैमरा, ओके, सेडिमेंट्स जो है वो आते ही जा रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, सपोज दिस इज वन, सपोज दिस इज सॉइल नंबर 1, सपोज, ऐसा होता नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये सॉइल नंबर 1 है, ये अभी जाकर ये आज गंगा ने डिपॉजिट किया. आफ्टर यू नो मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर, व्हाट विल हैपन, सेडिमेंट डिपॉजिट तो होता ही रहेगा. So this soil number 1 will get pushed to this place, and the new sediment which is soil number 2, it will get replaced. तो ये जो soil number 1 है, ये भी वही sediment है जो गंगा ने लाया है, और ये भी वही sediment है जो गंगा ने लाया है. फर्क ये है कि ये old है क्योंकि ये बहुत पहले आया था, it has come 100 of years ago, and this is the newer one because it has come recently, but both of them have been brought by Ganga only, both of them are sediments only. So this is the newer one, and newer one is called khadad. ठीक है, what is khadad? It is new alluvium. And what is bangar? This is called bangar, this old one is called bhangar. Bhangar is older alluvium, okay. This is new alluvium, this is old alluvium, okay. This is the difference between khadad and bangar which you need to know, right? Now let us come to the next point. Okay, I hope you've understood khadad and bangar. Any question you can ask me. Khadad is more fertile than bangar, yes. Oh, definitely, khadad is more fertile. It is the newer alluvium. Both are alluvial soil, but khadad is more fertile than bangar. ठीक है.
Okay, let's come to the new point. Let us come to the new topic. Okay, now let us come to the map of Bihar. Let me show you which soil is found where. Which soil is found where? Okay, which soil is found where? Okay, so first is, yesterday I told you this is the Shivalik range. This is the Shivalik range. So यहाँ पे ये swampy area है. This is the swampy area. यहाँ पे marshy land है, थोड़ा सा Piedmont soil है. So the Shivalik range has the Piedmont soil. Piedmont soil. ठीक है. Piedmont, if I break the word Piedmont, Piedmont. Piedmont comes from Pied and Mont. Pied मतलब feet and Mont मतलब mountain. So from on the feet of the mountain, Pied, Piedmont. So as the name suggests, ये mountain का base है, base of the mountain है, इसीलिए इसको हम लोग Piedmont soil कहते हैं. And Shivalik क्या है? It is the foothills of Himalayas, and since it is the foothills of Himalayas, it has the Piedmont soil. Okay, Piedmont soil is acidic in nature. Let me change the ink. Piedmont soil, you go on writing, it is acidic in nature. As I told you, there is vegetation. ठीक है, swampy area है, vegetation है इधर, so it has humus content, और humus content से क्या होता है? Acidic nature बनता है. Okay, and second thing is, it has Piedmont soil is very coarse. C-O-A-R-S-E. Coarse मतलब fine, not fine particles. These are like fine particles. These are fine particles. Coarse मतलब बड़े बड़े particles. बड़े बड़े पत्थर जैसे बड़े बड़े shape के particles. So these are बड़े बड़े particles, and this is called the coarse structure. This is coarse and this is fine. So this is not fine. यार जो यहाँ पे जो soil होते हैं उसके particles थोड़े coarse होते हैं. क्यों coarse होते हैं? क्योंकि wait just a minute. क्योंकि the rivers from the Himalaya, they are coming from here, right? They are coming here. सारे rivers तो यहीं से आ रहे हैं ना, नेपाल से most of them are originating. तो when they come to this place, बिहार में तो ये enter हो रहा है ना, तो when they come to Bihar, when they reach Bihar, when the river it reaches Bihar, क्या करती है ना river carries sediments, so it also carries big boulders, rocks, big particles. जो जितने भारी जो materials होते हैं ना, वो उसको river अपने upper course पे ही deposit करते हुए आती है. Is it okay? You understand? जब river एक flow कर रही है, ठीक है, let me draw it here only. So जितने बड़े boulders होते हैं, rock boulders होते हैं, छोटे छोटे pebbles होते हैं, जो heavy rock structures होते हैं, coarser grains होते हैं, वो रिवर क्या करती है? पहले ही अपने कोर्स के अपने फ्लो के ऊपरी पड़ाव पर ही रिवर उसको डिपॉजिट कर देती है. ठीक है, सो दैट इट कैन फ्लो इजीली. लोअर कोर्स में आके रिवर फ्लोज इजीली. इसीलिए बाय द टाइम गंगा कम्स हियर, इट फॉर्म्स डेल्टा. ये इस एरिया पे आके गंगा जो है वो डेल्टा बनाती है. क्यों डेल्टा बनाती है? बिकॉज ऑल द बिग रॉक बोल्डर्स, big pebbles, coarser particles वो अपने upper course में deposit कर चुकी है, and now whatever is left is the fine sediment, और जो finest sediment होता है वही डेल्टा बनाता है. इसीलिए इस एरिया में हमें डेल्टा मिलता है. और ये अपर कोर्स है, तो ये अपर कोर्स में क्या मिलता है? कोर्स सॉइल मिलता है. COARSE. कोर्स मतलब बिग सॉइल पार्टिकल्स, वेरी बिग सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, सो यही रीजन है, सिंस शिवालिक इज इन द हिमालयन रेंज, इट इज द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, अपर कोर्स है ये, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके ओके ओके. So let us make the best division of Bihar. What is the best division of Bihar? It is river Ganga, almost here. Okay. Now let us come to the red soil. Let us come to the red soil area. Okay, there was a power cut, sorry.
Okay, so this is the Balthar soil. This is the Balthar soil. What is Balthar soil? Balthar soil is nothing but red soil. It is the red soil. Okay, it is the red soil. What have Balthar soil you will write here. Here you will write is Balthar soil. Balthar soil. What is Balthar soil? It belongs to the, it is a red soil only. It is the red soil only, but it is the transition zone. Sorry for the power cut, but you can see the slide, I guess. It is the transition zone between the Chota Nagpur plateau and the plains. Okay, there's a lot of power cut. Summer आते ही power cut वाली समस्या start हो जाती है. So there's a this is the transition zone between the Chota Nagpur plateau and the plains. Okay. So this Balthar soil, this zone is the transition zone between the Chota Nagpur plateau and the plains. This is the Balthar soil. Okay. So you will write, first you will in your map you will draw this. This is the Piedmont soil. ये नीचे का जो साउथ बिहार का ये थिन स्ट्रिप है, इट इज़ वेरी थिन स्ट्रिप, 8 से 6 किलोमीटर जितना स्ट्रिप है, ये है बाल्थर सॉइल. ये आप अपने मैप में लिखते जाइए, मार्क करते जाइए. ठीक है, यहाँ पे आप पीडमोंट लिखेंगे, यहाँ पे आप बाल्थर लिखेंगे. ओके, नाउ वी कम टू दिस. Now we come to this. This is, let me rub this. Okay. Now this is, ये कौन सा एरिया मैंने आपको कल बताया, कैमूर रेंज. सो यहाँ पर जो सॉइल है, ये जो सॉइल है, this soil is the red sandy soil. This is red sandy soil. This soil is the red sandy soil. Okay, it covers which area? Kaimur and Rohtas. Red sandy soil. Okay. This is Balthar soil. This Balthar soil is made of the Dharwad rock system only. And I said it is the transition zone. What is transition? यहाँ छोटा नागपुर प्लेटो है, ये क्या है? प्लेन्स है. तो ग्रेजुअली फ्रॉम द प्लेटो टू द प्लेन्स वी आर गोइंग. तो ये क्या है? एक चेंजिंग एरिया है, ये मतलब बोलते हैं ना हॉल्ट है, एक चेंजिंग एरिया है. तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक फेस चेंज हो रहा है. सो दिस इज द Balthar soil. Correct? Yeah. Now come to the next feature, which is the terai. This is the terai. I told you yesterday, this is the terai. Right? This is the terai zone. ये मैंने आपको कल ही बताया था. This is the terai zone. It extends from 8 to 10 kilometers. ये भी 8 to 10 kilometers का इसका width है. From West Champaran to किशनगंज. मतलब सोमेश्वर रेंज से लेके किशनगंज तक तेराई सॉइल ये एक थिन स्ट्रिप है. सबसे ज़्यादा अररिया में है तेराई सॉइल, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन ह्यूमस बिकॉज ये एक स्वैम्पी एरिया है. कल ही मैंने आपको बताया था ये एक स्वैम्पी एरिया है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ द रेस्ट ऑफ होल बिहार, is the plains. This is the plains, and the rest of the whole of Bihar is the alluvial plain. This is the alluvial soil. But इसमें भी कुछ differences है. So alluvial soil तो ये है, 90% of Bihar is alluvial soil. So you've come to know ये major area क्या है? Alluvial soil. But there is also a type. Okay, there is also a difference. ये alluvial soil का भी एक types है. क्या है types? इसमें भी खादड़ और बांगर है. कैसे है? आपने तेराई तक समझ गया. ये आपका तेराई है, ये आपका तेराई है, ये आपका तेराई है, तेराई. ओके. अब हम लोग आते हैं इस पर.
ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पर, सॉइल समझते हैं पहले। तराई है ये, दिस इज यहाँ पर जो नॉर्थ बिहार है, इट इज ड्रेन्ड बाय सम ग्रेट हिमालयन रिवर्स लाइक द महानंदा, द कोसी, कमला, बागमती, ओके, बूढ़ी गंडक, देन घाघरा और सरयू, जिसको हम सरयू भी कहते हैं। सो आप देख रहे हैं ग्रेट हिमालयन रिवर्स आर देयर। नाउ व्हाट दीज हिमालयन रिवर्स आर डूइंग, सारे सेडिमेंट्स लाते हैं। हिमालयन रिवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, दे ब्रिंग रिच सेडिमेंट्स, सो दे आर डिपॉजिटिंग ऑल द रिच सेडिमेंट्स ओवर हियर, ओके, and again they are continuously flowing and continuously they are bringing the rich sediments and depositing all the rich sediments here, all the rich sediments। तो ये अपने जितने भी बैंक्स है ना, बैंक्स पर रिच सेडिमेंट्स डालते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। एज अ रिजल्ट द ओल्डर सॉइल, द ओल्डर एलुवियम, जो पहले वाले हैं, वो क्या होते हैं, वो पुश हो जाते हैं ना, वो इंटीरियर में चले जाते हैं, वो बीच में चले जाते हैं। ये बीच वाला एरिया कौन ले लेता है, ओल्डर एलुवियम ले लेता है। द ओल्डर एलुवियम इज टेकिंग दिस प्लेस एंड दिस एरिया इज बीइंग कवर्ड, दिस, ये जो बीच का एरिया है, इसको कौन ले रहा है, ओल्डर एलुवियम ले रहा है। और ये वाला एरिया कौन ले रहा है, न्यूअर सेडिमेंट्स, जो नए सेडिमेंट्स है वो ले रहे हैं, नए सेडिमेंट्स ले रहे हैं। रिवर इज फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली, रिवर इज ब्रिंगिंग सेडिमेंट्स कॉन्टिन्यूसली। सो व्हाट हैपेंस, दिस एरिया सिंस इट इज ओल्डर इट इज बांगड़ and this is new, it is called khadad, okay, this is Bangar, this is